In Kashmir, where scenic beauty intersects with decades long conflict, there's a rich artisanal history, especially for its exquisite shawls. For centuries, one fiber stood above all others: Shehtush, or the king of wool. Today, in these very streets, its name is met with silence, even denial. Shehtush officially doesn't exist here anymore, and yet it does. Before we dive into the trade of Shehtush, it's important to understand its history, which goes back to the Mughal Emperor Akbar, who is documented to adore the fabric to such an extent that he restricted its weaving to just two looms in his kingdom. The Shehtush's fiber is astonishingly fine, around 10 microns, making it lighter and warmer than pashmina or merino wool. Legend says that the Shehtush is thin enough to pass through a wedding ring and warm enough to hatch an egg. But the secret behind its creation holds a dark truth. The Shehtush wool comes from the Tibetan antelope, or chiru, which is found in some of the harshest environments of the Tibetan Autonomous Region. In the 1970s, conservationists discovered mass killings of the animal to cater to the world's lust for this fine fabric. They say that it takes the life of 3 Tibetan antelopes to make one woman's shawl, and 5 to 6 for a man's shawl. As international scientific studies reveal the devastating toll on this Himalayan goat, the world took action. Shehtush was banned globally under CITES in 1979. India followed suit the same year, and Kashmir implemented the ban in 2000. Despite the ban, investigations by both conservationist bodies and media organizations have found that the chiru continues to be in danger. What we find is that or the seizures are clearly showing that the trade is still ongoing, and we don't have any indication suggesting that this comes from stockpiles. So the information we can gain from our seizures is that somehow this trade is still ongoing, but we can't give any answers in terms of what is happening on the ground, and where is the poaching happening, how is it being smuggled. In Kashmir, particularly the old city of Srinagar, Shehtush weaving once formed the economic backbone of Kashmiris. Before the ban, a little over 45,000 Kashmiris were involved in the production process. Most of them were weavers. But with the ban came unemployment and a major transition that shook the weaving industry. By 2002, active Shehtush weavers were reduced to 15,000, with projections for further reduction in the coming years. There is no recent official survey, but the official word on Shehtush weaving is that it is effectively over. उससे बिजनेस हो गया कम, उसमें ज़्यादा वो पैसा आता था, उसमें डेवलप होता है सब जगह, उससे हो गया बहुत प्रॉब्लम। और उन्हें जो बनाते थे ना, उन्होंने छोड़ा ये काम, दूसरा काम करते आप। गोना कारखाना ऐसे स्पॉन्स कारखाना ऐसे गोबान कारखाना ऐसे खुली सुई खाला इस बिन मटेरियल बनो हुई वो कारखाने बंद बहरान तो उसने पस अगर कैसे आसम बहरान तो उसने कामानस में निश्चु ना सोच अब माता है अगर वो गोई के लीक तो चीज़ बहालस त्रोहन वजह आस पर से ज़माने थी बैठ की मिस आज चीज़ थोमस वायरस सखर दिया ज़ाने आज क्या इस वरना जानवर हैं सच मारा ज़ाने अल्लाह ताला बेहतर क्या है इस करने के तात्या कर करनी बिचारन टास. The transition was not easy for everyone. While traders shifted to other forms of legally accepted markets, especially pashmina, the weavers struggled the most, not so much with skill, but in terms of economic sustenance. Pashmina sells for half the price of Shehtush, and so artisans earn less. बहुत ऐसी कम्युनिटी में आओ रहती थी, विडोज थी या थी जो पूरा डिपेंडेंट इन्हीं पे थी. In 90s 250 used to be a good amount. मैं नहीं कह सकता था कि they were rich, but they used to run their household with it. लेकिन बैन के बाद it got an impact on their livelihood. They had to move to other things.
पश्मीना पे करना पड़ा, उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई, सीधे 250 से 115, तो उनका लाइवलीहुड वैसा नहीं रहा और उनका पैशन ख़त्म हो गया। जब तक किसी भी चीज़ में आप पैसे कमा रहे हो, आप पैशनेट हो जाते हो, आप ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो। जब वो आपको रिटर्न्स नहीं देता, आप वो पैशन खो दे देते हैं। यहाँ पे रूलर्स के पास तो ज़मीनें वगैरह थी, लेकिन जो अर्बन लाइफस्टाइल था उनके पास खेती बाड़ी नहीं थी, तो उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या थे? हैंडीक्राफ्ट्स। जो भी पश्मीना के मेन स्किल्स थे वो रूटेड थे एक्चुअली ओल्ड सिटी में। ओल्ड सिटी में आप लगभग आउट ऑफ जो हमारे ओल्ड रेजिडेंस का था, जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ हम हर दूसरे घर में देखते थे कि इससे रिलेटेड कोई काम हो रहा था। तो मेरे हिसाब से उस टाइम तो 50% आबादी इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन बैन हो गई तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको और चीज़ें करनी पड़ी और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गए। वो उनका सोसाइटी में वो रहा नहीं, वो इज़्ज़त मिली नहीं, क्यों? वो एक स्किल लेबर थी, उसके आर्टिजन्स थे, आर्टिजन्स पे से लेबर्स पे आ गए। अब उनको क्या करना आता था? वो तूश का कपड़ा बनाना आता था, वो मिला नहीं बनाने के लिए, वो ईंटा उठाने लग गए। आप एक यही बात है कि आप एक स्केच आर्टिस्ट को ईंटा उठाने लग जाए, उसका तो पूरा ईगो ख़त्म, पूरी उसकी स्किल सेट ख़त्म, और वो उसी स्किल को कोसने लग जाता है कि यार मैंने ज़िंदगी बिता दी इस पे डेडिकेट करके, अब ये मुझे नहीं दे रहा कुछ। Despite the ban and conservation efforts, the demand for Shaitush persists. Investigations like India's Operation Soft Gold, conducted by the Wildlife Crime Control Bureau, revealed a sophisticated black market that thrives even today. The Operation Soft Gold found that the wool follows the secret routes and shadowy networks all the way from Tibet through Nepal before reaching Kashmir for weaving. Our reporting took us to various South Asian countries, specifically Pakistan and the UAE. We found that Pakistan has laws against the trade, but Shaitush continues to be sold under the table in markets, while the fabric is worn publicly by the elite. In Pakistan, we found sellers who sold Shaitush shawls ranging from hundreds of thousands to millions of Pakistani rupees. ये भी पश्मीना के हैं और ये इंडियन है। अच्छा, ये इंडियन है, ये दोनों इंडियन है। ये इंडियन है, ये इसमें कलर है, ये भी है, ये ब्लैक में है। ये कश्मीरी पीस है। और ये आप कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल शातोश? ये अच्छा वाला शातूस है, प्योर नहीं कहेंगे, इसमें थोड़ी सी मिकदार पश्मीना की है। ये 80-20 कह देंगे इसको, 20% पश्मीना है, 80% शातूस है। ये शातूस है, ये इसको प्योर का पीस कहते हैं। और इसकी क्या कीमत मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में? ये आप किसी शॉप पे चले जाएंगे तो ये आपको 8 से 10 लाख रुपए कहेंगे। इसमें एक वाइट पीस है, ये स्ट्राइप से ये महंगा होता है। ये कलर, ये स्नो वाइट है, ये बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है ये कलर, क्योंकि ये कम होता है ये वाला। ये भी शातूस है, तो 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख। ये जो वाइट है इसकी क्या कीमत है? ये 10 लाख रुपए। अच्छा। और ये कश्मीरी पीस हैं, कश्मीरियों ने बनाए हैं ये। अच्छा। 3 गज का पीस है शातूस का, इसको प्योर पीस कहते हैं। ये कश्मीर मेड है, श्रीनगर का बना हुआ। वो जो दूसरे दिखाए थे पश्मीना के, वो इंडिया के बने हुए हैं, लेकिन ये प्योर कश्मीरी पीस है। और इसकी कीमत क्या है? ये 10 लाख रुपए का पीस है, ये 3 गज का है। ये जेंट्स का है, लेडीज का? लेडीज और जेंट्स दोनों इस्तेमाल करती हैं, वैसे ये जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। 3 गज का है ना, लेडीज के लिए 2.5 गज का पीस होता है। 2.5 गज का पीस पसंद करती हैं पाकिस्तान में। इंडिया में 2.25 गज के पीस आज भी ज़्यादा चलते हैं, तो ये बनाते हैं स्पेशली दूसरे मुल्कों के लिए बड़े पीस। ठीक है। और ये खड्डी पर बनाते हैं? ये खड्डी का बना हुआ है, यानी कि ये हाथ के बने हुए पीस है। In the UAE, we found shawl sellers openly advertising and selling what they claim to be authentic and handmade shaitush from Kashmir, with prices reaching thousands of dollars. They often import it as handicraft items, but experts told us that this smuggling is often facilitated by influential people or even diplomatic missions.
Many artisans in Kashmir we spoke with believe that most of the shahtush in the black market is either fake or it's from a pre-existing stock left from before the ban. वो तो अब दिखाई नहीं देगा, वो किसी के पास नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। अगर होगा वो नकली होगा, ओरिजिनल किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैं आंख बंद करके ये बताऊंगा ये असली है या नकली है। To be very frank enough with you, for me, because when the wool is not coming from China here to those dealers in Ladakh, and the borders are so tough, so I don't think so the shahtush is coming. So whatever is you will find anywhere, this will be either a replica shahtush or a mix of pashmina or something like that. I don't think so you will find shahtush anywhere in the world. No, I don't think so. If there are maybe some old stocks which are coming to the shelves again or something like that, or old collections of some private collectors. So they will be coming to the market or something like that. But new, I don't feel that there is any new shahtush. Nobody is making. Nobody will have that kind of capacity, or nobody wants to go into this kind of stresses again. No sane person in this wants to go and be treated as a culprit, as a drug dealer. So I don't think so. It's advisable. If somebody is doing, it's not advisable for him. He should not. He should refrain. Kashmiri traders and artisans believe that the wool was sourced ethically from their counterparts in the neighboring Union territory of Ladakh, who in turn sourced it from Tibet. पहले ज़माने में अर्ली 90s या 50s तक मान लीजिए, उस वक्त लोगों में इंसानियत थी कि वो जानवर नहीं मारते। वो जो शहतूश का वूल था, जब ये भेड़ झाड़ियों की तरफ जा रहा था तो इनका कुछ वूल झाड़ियों में फंसता था, तो लोग वो जमा करते। लोग पैसों के भूखे नहीं थे, आधी रोटी खाते थे, लेकिन इंसानियत थी कि नहीं चलो वो कलेक्ट करते थे उसका, उनको जानवर को नहीं मारते। फिर जनरेशन गैप आ गई, उन्होंने फिर मारना शुरू कर दिया, उन्होंने फिर मारना शुरू कर। इसी वजह से फिर बैन आ गई कि नहीं भाई, जानवर को नहीं मारना, इस एनिमल को हमें अपने शो ऑफ के लिए नहीं मारना। मसला वही है, शो ऑफ के लिए हमें किसी बेजुबान का कत्ल नहीं करना, और वो भी जेन्युइन बात है। They claim the wool was gathered from bushes where chiru hair was caught, not hunted. But conservationists aren't convinced. So from all the information that we have and from the general information that is out there, this is really not possible. So it is not possible to rear these animals in captivity. It is not possible to share these animals. This is a wild species that is really not in contact with humans, that has a huge desire to migrate and cannot be held in captivity. So from what we know and from the information that we have, this is not possible. See, we are against any kind of killing. It's not that we are not against it. We are against. We want anything ethically, if it's viable, well, we should be given it a try. Maybe we succeed. We are already lost. We have lost it already. The business is finished now. But if there is a chance of, rehabilitating these 20,000 viewers, that's my personal interest, nothing more than that. वहाँ पे पैसों की कमी नहीं है, चाहे दुबई लीजिए, चाहे आप असल में जो इंटरनेशनल मार्केट इसका बढ़ गया तभी इंटरनेशनल मार्केट में हाथी के दांत हमें किस काम के, हमें आम आदमी को हाथी के दांत किस काम आएंगे? इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी? मसला वही है। The debate continues. Is it the supply or the unwavering demand from wealthy consumers that drives this illegal trade? The story of shahtush is a complex tapestry of history, culture, economics, and conservation. A global ban protects an endangered species, yet fuels a persistent black market. Artisans struggle while illegal sellers profit from elite demand. Until demand ceases or a truly ethical solution is found and agreed upon globally,
the shadow of Shahtush will continue to hang over the fragile ecosystem of the Himalayas and the dwindling weaving communities of Kashmir.